हेलो स्टूडेंट्स मु विकास पट्टनायक तुम मान स्वागत जनावि भाग्यलक्ष्मी एजुकेशन रे आज विषय हूँ श्रेणी नवम FA1 प्रस्तुति। तो वर्तमान सब्जेक्ट देखा इंग्लिश। तो इंग्लिश तुम कौन कौन रही देख सॉरी FA1 फर्स्ट रहा गोटे प्रोज द प्राइसलेस गिफ्ट, सेकेंड रहा गोटे पोएम होम एंड लव, थर्ड रहा गोटे नॉन डिटेल्ड द ट्रंक ऑफ गणेश, फोर्थ रहा तुम ग्रामर्स जोटा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वर्ब्स, टाइम एंड टेंस, एसे आउ ट्रांसलेशन। बर्तमान एतिकी तुम कोर्स अच्छी FA1 तो से प्रथम अच्छे आम प्रोज प्राइसलेस गिफ्ट। तो चलो तार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करवा। प्रथम क्वेश्चन कहूँ द गर्ल आस्क्ड द कैशियर if the gentleman was dash. The girl asked the cashier if the gentleman was an Indian. गर्ल टा कैशियर कौन पचारा ना जेंटलमैन कौन थे ना जेंटलमैन थे गोटे इंडियन। नंबर 2 the girl told the writer that she lived with her dash. The girl told the writer that she lived with her old widowed mother. कौन old widowed mother गोटे वृद्ध विधवा माँ सहित से रोला। तो नंबर 3 I think so. Who is I here? Who is I here? I think so. I टा किए थी ना I होची द cashier. Option A. Next, how do you do? Who asked this? How do you do? एक क्वेश्चन किए पचाते ना ऑप्शन सी द राइटर। राइटर पचाते हाउ डू यू डू काकू ना मैगी को। नेक्स्ट 5 नंबर Maggie's mother had kept dash of her son in an envelope. Maggie's mother had kept dash of her son. Maggie रो माँ निज एनवेलोप रे निज पुअर कौन रखिले ना ए फोटोग्राफ गोटे फोटोग्राफ तंकर पुअर एनवेलोप रे रखिले। नेक्स्ट 6 नंबर मैगी टुक ए शिलिंग आउट ऑफ ए डैश। मैगी टुक ए शिलिंग शिलिंग माने कोन गोटे मॉनेटरी यूनिट टा जोटा कि ब्रिटेन रे चलछि कॉइन जो कहछ हमें। तो सेटा कोट रखिले सी ना निजरो पॉकेट रे। ऑप्शन ए जोटा कि पॉकेट। नेक्स्ट हाउ कैन आई एवर थैंक यू? हु इज आई हियर? हाउ कैन आई एवर थैंक यू? ए सेंटेंस रे आई होछि के ना आई होछि ठी मैगी। आई होछि के ऑप्शन सी मैगी। नेक्स्ट 8 नंबर द राइटर वेंट टू ए डैश टू हैव हिज लंच। को फर्स्ट तमरो थिला एटा कोन द राइटर वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वेजिटेरियन ऑप्शन सी। नेक्स्ट what did the writer start skimming through? What did the writer start skimming through? Na skimming through a newspaper. Option B. Next the girl asked dash about the writer. The girl asked the cashier about the writer. Next whom did the writer ask about the girl? Writer kaha को girl विषय पचारले ना the waiter का पचारले। ऑप्शन सी the waiter. Next 12 number the girl used to come to the restaurant on days only. The girl used to come to the restaurant on payday only. कोन payday only. Next 13 number the writer kept thinking of the girl's days. The writer kept thinking. Writer कौन जो मन रे भाबुतिले ना poverty stricken figure, sad figure, annexous figure ना all of this ना writer ए सब विषय रे भाबुतिले कार से झियर सब विषय रे भाबुतिले। ऑप्शन डी all the above. Next the writer went up to the girl and took the chair dash. The writer went to the girl and took the chair of her opposite. कौन हबो? ऑप्शन बी opposite side देके चेयर टा रखिले। नेक्स्ट होची 15 नंबर आर यू एन इंडियन हु आस्क्ड दिस? तो देखो गोटे ध्यान देखो 14 नंबर कौन थिला देखो ऑपोजिट हियर्स थिला और ऑपोजिट हर अछि। देखो पाखापाखि सेम अछि तो जे भलार देखिबो से कंफ्यूज होबो। तो इधर कौन देछि ना ऑप्शन बी होबो ऑपोजिट हियर्स एस लागि छला। तो बर्तन पळा सते नेक्स्ट क्वेश्चन को आर यू एन इंडियन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? आर यू एन इंडियन बोली किए पचारथिले ना मैगी। किए पचारथिले मैगी का पचारे राइटर पचारथिले। ऑप्शन सी मैगी। नेक्स्ट 16 नंबर व्हाट डिड मैगी ओपन द डोर विथ? मैगी काहे डोर ओपन करले ना ए थिन लेच की। खाली लेच की होबनी कि थिन की होबनी कोन ऑप्शन डी ए थिन लेच की। टुगेदर वी descended the stairs to the kitchen. What do you mean by the underlined word? Descended रे मीनिंग कोन बुझी went down कोन हबो went down. Next 18 नंबर what was Mr. Bethy
doing when the writer reached her house? What was Mr. Bethy doing? Mr. Bethy कौन करथिले त राइटर घर को आस्थिले ना making cakes. उत्तर होबो ऑप्शन ए making cakes. Next 19 number. What were Mr. Bethy's hands covered with? Mr. Bethy हाथ कौन हेतिला ना फ्लोर तांग हाथ रा कवर हेतिला ऑप्शन सी. Next, Mr. Bethy inquired about dash the Punjab ना India ना frontier ना both A A B ना मिस्टर बेथी राइटर को उभय दुईटी विषय पचार गोटे हूँ द पंजाब आउ इंडिया तो ऑप्शन डी हम बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट 21 नंबर. Mr. Gupta told Mr. Bethy that the Punjab is a dash to live in. देखो पंजाब गोटे अच्छी और इंडिया को दीटा प्लेस अच्छी तो पंजाब पचले कौन हम हेल्दी प्लेस हम कौन हम हेल्दी प्लेस. पंजाब इज ए हेल्दी प्लेस टू लिव इन. नेक्स्ट 22 नंबर. What did Mr. Bethy show to the writer? What did Mr. Bethy show to the writer? ना her son's photograph. कौन देखेले ऑप्शन सी निजर पूरा पूरा फोटोग्राफ टा मिस्टर राइटर को देखेले. नेक्स्ट 23 नंबर. Mr. Bethy told the writer that Saturday night is a time of festivity in dash. Mr. Bethy told the writer that Saturday night is a time of festivity in poor neighborhoods. कौन होगा ऑप्शन डी poor neighborhoods. नेक्स्ट मिस्टर बेथी वाज मैगीज डैश. मिस्टर बेथी कौन थे मैगी तुम जानी एटा तांके तार मां थिले ऑप्शन बी मदर. नेक्स्ट 25 नंबर. व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इंडिया हु आस्क्ड दिस? व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इंडिया रे किया पछथिले ना मिस्टर बेथी का पछथिले राइटर को पछथिले. Next 26 number. What did Mr. Bethy order Maggie? What did Mr. Bethy order Maggie? To take the writer upstairs. To take the writer upstairs. Option C. Next 27. Frankie was dash. Frankie कौन थिला? Maggie's brother, Mr. Bethy's son, Maggie's guardian, all of these. तो एटा हबो ना फ्रांकी उभय मैगी रो ब्रदर भी थिला बेथी रो सन भी थिला आ मैगी रो गोटे गार्डियन भी थिला तो ऑप्शन डी हबो ऑल द एबव. 28 नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट अछि मैगी शोड डैश टू मिस्टर गुप्ता. मैगी मिस्टर गुप्ता को कौन देखिला गोटे मिराकुलस रिंग देखिला. कौन देखिला ए मिराकुलस रिंग ऑप्शन बी. नेक्स्ट 29. Mr. Gupta visited Mr. Bethy and Maggie after dash. तो Mr. Gupta visited Mr. Bethy and Maggie after several months. कौन after several months? Option A. Next 30 number. Mr. Bethy's condition aggravated by her dash. Mr. Bethy's condition aggravated by anxiety of Frankie. Anxiety of फ्रांकी जो कि ऑप्शन सी. तो देखो दीड देखो अच्छी देखो एंग्जाइटी फॉर मन देछि एंग्जाइटी फॉर फ्रांकी तो कोन हबो फ्रांकी रो चिंता तांको देहटा बहुत बिगड़ी गलानी. तो नंबर 31. मैगी रिक्वेस्टेड द राइटर टू टेल हर मदर दैट डेस. मैगी रिक्वेस्टेड द राइटर टू टेल हर मदर दैट फ्रांकी इज ऑल राइट एंड अलाइव. फ्रांकी भलो अछि पुनी सुस्थ अछि बोली जणाया पे मैगी राइटर को कहला मां को कह दी. नंबर 32. Tears of happiness welled up in dash. Tears of happiness welled up in Mr. Bethy's eyes. Mr. Bethy's eyes. Option C. 33 number. The writer learnt from Maggie that her only guardian was dash. जाने कथा एटा फ्रांकी जोड़ा कि तांकर only guardian थिला. Option B. 34 number. Mr. Gupta and Maggie chatted pleasantly and soon reached dash. ना मैगी और गुप्ता तांके कोडी पहुंचले गोटे बस स्टैंड ए बस स्टैंड. ऑप्शन ए. Wishing a dash. Mr. Gupta told Mr. Bethy that her son was alive and well. Mr. Gupta कौन कहले मिस्टर बेथी को ना गुड मॉर्निंग. कौन जणले विश रे गुड मॉर्निंग. ऑप्शन डी. नंबर 36. Where had been Frankie killed? Frankie कोठी देहत्या करथिला बा मरथिला ना से on the frontier. कोठी on the frontier. Number 37. Mr. Gupta
felt dash to face Mr. Bethy, so he wrote a letter to them announcing his departure. Mr. Gupta ନିଜକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ନା ashamed, ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି ashamed. 38 number. When Maggie had come to say goodbye to the writer, she was wearing dress. ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗି ଆସିଲା ରାଇଟରଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା ନା ବ୍ଲାକ୍. she wearing black. ଅପସନ୍ ଏ. Next, at the last morning, the writer told Maggie that he had entered the dash. Last meeting ରେ ରାଇଟର ମ୍ୟାଗିଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କେ କୋଉ ଏଣ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ନା ପଞ୍ଜାବ ସର୍ଭିସ. କୋଉଠି? ଅପସନ୍ ସି ପଞ୍ଜାବ ସର୍ଭିସ. Next, 40 number. Maggie told that Frankie had been buried near dash. So Maggie told that the Frankie had been buried near the frontier. Kuda? Option B, near the frontier. 41. Why had Maggie come to Mr. Gupta? Why had Maggie come to Mr. Gupta? Maggie कौन पे आस्तेला गुप्ता पाखକୁ? To say goodbye. कौन जणा पे goodbye जणा पे से तो Maggie राइटर पाखକୁ आस्तेला. Next, 42 number. At the last meeting, Maggie requested the writer to dash. Last meeting रे Maggie कौन request writer को? Visit her brother's grave. Option C, visit her brother's grave. 43 number. At the last meeting, Maggie face filled with dash. Last meeting रे Maggie रो मुह भी कौन हेतला एमिति? Gratitude. Gratitude बोलबा त अर्थ कोन? कृतज्ञता. Maggie रो मुह गुड कृतज्ञता हिसाब रे भरपूर हेगला जेतबेले राइटर जे लास्ट मीटिंग मिसला. 44 number. What did Maggie hand over to the writer? Maggie writer को कौन hand over कला? A shilling. कौन कला? A shilling. Option C. किछि टंका बा किछि निजर स्वर जतो किछि मनी से राइटर को देला. 45 number. In her emotion, Maggie lowered her dash. Emotion रे Maggie कौन हैला? lowered हैला कौन तर? आखी, eyes. Option A, eyes. She was forgoing so much for love of her brother. What do you mean by underline what? Forgoing. Forgoing sacrificing. ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ जो କହିଲା sacrificing. Option B. Next, 47. What do you mean by expression in a fix? What do you mean by the expression in a fix in a dilemma? କ'ଣ ହବ? Dilemma. The option C. Next, 48 number. Next, 14 number देखो. God still remains dash. God still remains mysterious. Option B, mysterious. देखो लगातार अच्छी mystery अच्छी, mysterious अच्छी, mysteriously अच्छी, mysteriousness अच्छी. तो भल देखिबो ऑप्शन बी जोटा कि हमर mysterious. जोटा vocabulary तुम स्किल आछी ना. Next, 49. Father will dash me to Kolkata. Father will accompany me to Kolkata. Option C. Next, 50. The child needs dash to study harder. The child need encouragement. Kono? Encouragement. Option D. The child needs encouragement to study harder. Next, 51. She dash takes the village road. She usually. Kono? Usually. The option B. Usually takes the village road. Next, 52. I could understand his dash. I could understand his eagerness. Option A, eagerness. Next, dash is opposite to courage. Courage ର opposite କ'ଣ ଅଛି? Discourage. କ'ଣ ହବ? Option C, discourage. 54. Dash is opposite to healthy. Healthy ର opposite word କ'ଣ? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ unhealthy, ଯୋଉଟା କି option B, unhealthy. Dash is opposite to dead. Dead ର opposite କ'ଣ? Alive. କ'ଣ ହବ? Alive. Option D, alive. Dash is opposite to virtuous. Virtuous ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ, ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବ virtuous. ତାର opposite କ'ଣ ହବ? Vicious. Option A, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ, ନଷ୍ଟରେ ବୁଝୁଛି opposite ହବ. Next, 57. Dash is opposite to calculate. Calculate ର opposite କ'ଣ? Miscalculate. ଯେଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ option C, miscalculate. ଏବେ next, number 58. We finished our lunch. We finished our lunch. And right passive forms କ'ଣ ହବ? Our lunch was finished. Our lunch was
finished जो कि ऑप्शन बी आर राइट पैसिव फॉर्म टा होची आवर लंच वाज फिनिश्ड. नेक्स्ट 59 someone has fed the cows. Someone has fed the cows. आर कौन होगा राइट आंसर टा the cows have been fed. The cows have been fed जो कि ऑप्शन सी. नेक्स्ट कोची सेक्शन नंबर people eat mango in summer. People eat mango in summer. कौन होगा mango is eaten in summer. Mango is eaten in summer जो कि ऑप्शन बी mango is eaten in summer. Next the girl is making the cakes. The girl is making the cakes. आरो राइट आंसर कौन होगा the cakes are being made by the girl. Option A. The cakes are being made by the girl. Next last don't they kill the people. Don't they kill the people. कौन होगा are not the people killed by them. Are not the people killed by them. Option B. तो एतिक थिला हमरो प्रथम प्रोज जोटा कि प्राइसेस गिफ्ट रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आउ जहाँ कौन जदि डाउट कौन थो तार डिस्क्रिप्शन मो व्हाट्सएप नंबर देदेवि मत कांटेक्ट करि पारो आ जहाँ को कौन पीडीएफ दरकार थो कि कौन जहाँ भी बुझाबुझी थो तो मो व्हाट्सएप मत कांटेक्ट करि पारो. धन्यवाद.